welcome my dear students to the second video of this week. This week I had done that and I had thought that I have to make two videos. First is for the 3.3 exercise, and for word problems I have to make the distinct video, the different video. Okay, so for the word problems you have to prefer this video. This is for the word problem specially. This is the first word problem, the question which I had written in the board. What is the question? Just see in your book also, and I will show you in the board also. Okay, what is the question? Here the question is, a container has 32,346 milliliter of water. एक कंटेनर है उसमें 32,346 मिलीलीटर वाटर का है, वाटर का कैपेसिटी दे दिया उस कंटेनर का. अनदर कंटेनर, एक और कंटेनर है, has 40,464 मिलीलीटर ऑफ वाटर. दो कंटेनर से, एक कंटेनर में 32,346 मिलीलीटर, दूसरा कंटेनर में 40,464 मिलीलीटर ऑफ वाटर. अब ये दोनों कंटेनर को पकड़ के एक दूसरे कंटेनर पे भर दिया गया. ऐसे एक दूसरा कंटेनर, इस दोनों कंटेनर को दूसरे कंटेनर में भर दिया गया, और दूसरा कंटेनर जो तीसरा कंटेनर है जिसमें इन दोनों को भरा गया, उस कंटेनर में कितना है वो पूछता. देखो यहां पर पहले बोला बोथ कंटेनर्स आर पोर्ड इनटू एन एम्प्टी टैंक. एक एम्प्टी टैंक था, उसमें दोनों कंटेनर का पानी डाल दिया गया. अब कितना लीटर, हाउ मेनी लीटर्स, ये ध्यान देना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द टैंक कंटेन्स. लीटर्स पूछ रहा है, दिया है मिलीलीटर में. दो तरीके से बना सकते हैं. या तो हम ऐसा करें कि ये दोनों कंटेनर का जो कैपेसिटी दिया हुआ मिलीलीटर में, पहले इनको कन्वर्ट कर दे लीटर में, बाद में ऐड करेंगे. क्या ऐड तो करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पोर हुआ है, तो उस कंटेनर में कितना होगा, जितना दोनों में था उतना ही होगा ना, तो दोनों को यहाँ ऐड करना पड़ेगा. लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पहले ऐड कर लो, बाद में चेंज करना, क्योंकि अब अगर आप पहले चेंज करते हो ना तो आपको दो बार चेंज करना पड़ेगा. इसको भी लीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी लीटर में चेंज करना पड़ेगा. जब आप ऐड कर दोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, बाद में आप उसको खाली आपको एक ही बार लीटर में चेंज करना पड़ेगा. तो मैं बोलूंगा कि आप पहले प्लस कर लो, पहले ऐड कर लो, उसके बाद. ठीक है, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर in the container, in the first container. Okay, पहला जो कंटेनर है हमारा, उसमें कितना अमाउंट है, 32346 32346 मिलीलीटर. ओके, एंड फिर लिखेंगे यहीं पर कि अमाउंट ऑफ वाटर इन द second container. Okay, so what will be the here 40,464 milliliter. Now what is the third thing here, total amount of water in an empty tank. Total amount of water in टैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे इन मिलीलीटर. मिलीलीटर में आएगा ना अभी हमारा आंसर, प्लस करना है. हमारा आंसर तो अभी मिलीलीटर में आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया मिलीलीटर में अभी आएगा. बाद में चेंज करेंगे यहां पर और लीटर में लिख देंगे. ओके, सो 6 + 4 विल बी 10, 6 + 4 + 1 विल बी 11, 3 + 4 7 + 1 8, 2 + 0 2, and 3 + 4 will be 7 in milliliter. So what is our answer here? So total amount of water in tank in liter. अब लीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो मेरा आया 72,810 milliliter to liter, small to big, we have to divide. What is the gap between here, between milliliter and liter? It's 1000, so we have to divide by
1000 here. So when we will divide by 1000, the point will be put before the 3 points. So here the answer will be 72.810 liter. Okay, अगर आपको इच्छा नहीं है वो लास्ट वाला जीरो लिखने का, तो you can write this answer as 72.81 liter, and this is your final answer. In this way, you can solve the first word problem of exercise 3.4. So students, let's see the second word problem. It is the cut copy paste of the first word problem, because the text is same but only the numbers are in the decimal form. In the previous questions, the numbers were in the whole numbers. The previous question numbers were whole numbers, but in these numbers are in the decimal form. So we have to add here also, because the same question is here. A container has 1423.26 liter of water. Another container has 7214.23 liter of water. Both the containers are poured into an empty tank. दोनों को एक खाली टैंक में डाला गया. अब उस खाली टैंक में कितना लीटर वाटर है? सेम टू सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू add this, and the answer will be in liter, because here one more change is there, because here our numbers are in liter. So here we are free from converting the units. Here no need to convert the units, because already the units is in liters. So only addition we have to do here. Okay, only addition we have to do. So let's start. Amount of water in first container. Amount of water in first container. It's 1423.26. 1423.26 liter, and amount of water in second container is 7214.23 liter. Okay, so total amount of water in empty tank is the addition of these both containers. So what will be the answer here? The answer will be 6 plus 3, it's 9. 2 plus 2, it's 4. The decimal will be in its place. 3 plus 4, it will be 7. 2 plus 1, it will be 3. 4 plus 2, it will be 6. And 1 plus 7, it will be 8. This is the answer. Okay, so what is the total amount of water in the empty tank in liters? It's 8637.49 liters. This is our final answer here. Okay, my dear students, now we are going into the third number question. So students, here's the third number. Okay, third number question. A container had 334.762 liter of milk. Out of this, उसमें से 142.676 liter was consumed, means खत्म हो गया, उसका यूज कर लिया गया. इतने लीटर ऑफ मिल्क का यूज हो चुका है, पहले इतना था, इतना का यूज हो गया. सो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर? अब कितना बचा? इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, लास्ट में लेफ्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, कितना बचा, इस तरीके से पूछे तो बेटा आपको यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. ओके, सो अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो व्हाट विल बी अवर फर्स्ट स्टेटमेंट? अमाउंट ऑफ मिल्क
in the container कितना है 334.762 334.762 लीटर. ओके, सो अमाउंट ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड is equal to 142.7676 2.676 liter. Okay, we have to subtract. After that we will get the quantity of milk left in the container. Okay, so we can write quantity of milk left in the container. We have to subtract. Okay, so let's subtract it. We have to take 1 from here. It will be 5 and here it will be 12. 12 minus 6, here 6. 5 minus 7 is not possible. We have to take 1 from here. 15 minus 7 is 8. 6 minus 6 will be 0. Point will be in its place. 4 minus 2 it will be 4. 3 minus 4 is not possible. We have to take, okay, 13 minus 4 it's 9 and 2 minus 1 is 1. So this is our answer. The quantity of milk left in the container is 192.086 liter of milk is left in the container. Okay, this way you have to solve this question. 3 questions are over. Okay, the 50% of exercise is over now. So students, this is the question number 5 of your exercise 3.4. Question number 4 is high order thinking question. You have to do it at your own self in your home, and if you want to know that how the question number 4 will be solved, then I will solve that HOT question in the live session. Okay, and this is our normal question of exercise 3.4. Number is 5. Okay, so a bucket can hold 22.96 liter of water. एक बाल्टी में 22.96 लीटर ऑफ वाटर होता है. 84 बाल्टी पानी अगर हम एक ड्रम में डालें, 1 2 3 4 ऐसे 84 buckets of water, if we put in a drum, in a big drum, the drum then it can be filled. So we have to find the capacity of the drum in liters. तो ड्रम में कितना पानी हुआ बेटा? ड्रम में आखिर पानी कितना है? 84 buckets का पानी ड्रम में गया है ना. सो एक बकेट में अगर इतना पानी है तो 84 buckets में कितना पानी होगा, वही हमें निकालना है बेटा. जब भी एक का दे और एक से ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ता है. एक का दे और एक का एक से ज्यादा का पूछे तो, और ज्यादा का दे करके एक का पूछे तो डिवीजन होता. तो यहां पर एक का दे दिया है 1 bucket का और 84 buckets of water पूछ रहा है. So here we have to multiply simply. So let's write the statement. Quantity of water in a bucket. Quantity of water in a bucket is 22.96. 22.96 liter. Okay. So how many buckets are there? Number of buckets filled in drum. ड्रम में कितना buckets fill किए थे हम लोग? 84 buckets. So here we have to write 84 and we have to multiply this. So we will get the capacity of the drum. Quantity of water in drum. Quantity of water in drum will be the answer
which will be written here. Okay, so let's start the multiplication. 4 6 are 24. Okay, 4 9 are 36 plus 2, it will be 38. Point will be here where it is. 4 2s are 8 plus 3, it's 11. Okay, 4 2s are 8 plus 1, it's 9. Okay, so now we have to put 0 here and we have to vacate this place for the further carries. Okay, so 8 6 are, it's 48. Okay, point will be here. 8 9s are, it's 72. 72 plus 4, it's 76. Okay, 8 2s are 16. 16 plus 7, it's 23. Okay, and 8 2s are 16 plus 2, it's 18. Now we have to add this. 4 plus 0, it's 4. 8 plus 8 is 16. Point 1 is carry. 6 plus 1, 7 plus 1, it's 8. 9 plus 3, it's 12. 1 carry. 8 plus 1, it's 9, and this is 1. 1928.64 liter of water is the quantity of water in the drum. Our answer here is 1928.64 liter. Okay, and this way we can solve this, our second last word problem. Now last number 6 is there. This is the 6th number sum, and this is the most important sum because here at the first we have to convert the unit. Why? Because we have, first of all we have to explain, I will explain you this question, that a container has 219.64 liter of liquid. एक कंटेनर है उसमें 219.64 लीटर किसी लिक्विड का है, बड़ा कंटेनर है वो. अब उस कंटेनर में से छोटे छोटे बोतल्स में आपको लिक्विड्स डालने हैं. ओके, मीन्स आपको एक बड़ा दे दिया और आपको अब छोटे छोटे बॉटल्स में उस लिक्विड को भरने के लिए बोल रहा, तो साफ समझ में आ जाता है कि डिवीजन करने के लिए बोल रहा है, डिवाइड करने के लिए बोल रहा है. इतना बड़ा मेरे पास कंटेनर है, उसमें पूरा लिक्विड है, उसको छोटे छोटे बॉटल्स में हमें भरना है. मीन्स हमें उस लिक्विड को छोटे छोटे बॉटल्स में डिवाइड करना है. लास्ट में पूछा भी है कि हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी फिल्ड, कितने बॉटल्स को फिल कर पाएंगे हम. एक बोतल में कितना बेटा, टोटल लीटर में दिया हुआ, देखिए लीटर में, और एक बोतल में कितना 19 ml. तो बेटा ये जो लीटर में दिया हुआ है ना, इसको भी आपको ml में करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिवाइड एनीथिंग वी हैव टू फर्स्ट चेक दैट बोथ नंबर्स आर इन द सेम यूनिट, बिकॉज हियर द यूनिट ऑफ द टोटल quantity of the container is in liter and the unit of the quantity of liquid in a small bottle is in milliliter. Here the question contradicts. Okay, यहाँ पर ये question बनेगा नहीं. We have to change one of the units, but we will change this from liter to milliliter, from bigger to smaller unit. Here we have to multiply. What is the gap between liter and milliliter? Here the gap is 1000, so we have to multiply by 1000 to the number. Okay, so first of all we will write the quantity of liquid in container in liter. लीटर में बेटा कितना क्वांटिटी है, 219.64 लीटर. ओके, सेम थिंग, quantity of liquid in container in milliliter. Now we will change this in milliliter. So what will be our first action? Our first action will be 219.64. We will multiply this by 1000. So this point will jump 3 numbers to the right side, and here only 2 numbers are there.
So what will be the third number? The third number will be 0, which is behind 4 whenever we will write this type of things. Okay, so what will be our answer here? Here 219,640 milliliter we had changed. Okay, 219,640 milliliter. Now we can divide it. Now we can divide 19 219,640. Okay, so first of all 19 ones are 19 minus 0 2 9 will be put here. Again 19 ones are 19 0 1 6 will be here. Then 19 5s are 96. Again 0 10 minus 9 1 10 4 will be here. Again 5s are 90. 6 minus 9 minus 9 0. 14 minus 6 it will be 8 here, and 0 will comes here. Okay, and 19. Okay, so 80. 19 5s are, no, 19 6s are here, sorry. 19 6s are 96 and 19 5s are will be 80. Okay, and the denominator, it's the remainder is 0 here, and our answer is 11665. Okay, so what we can write here, number of such small bottles, number of such small bottles is equal to 11,665. Okay, I know that this part is somewhere not visible to you. Okay, but if you will have any doubt and any problem in any sum, I had explained the total steps of this question. First of all, we had converted this liter to milliliter, and then we had divided from 19 ml to 121,964 milliliter, and the answer is 11,665 here. Okay, so the word problems are over, and now with these word problems our video is also over. Thank you so much. We will meet in the live session. Must come.